Mickey. Ready, Jumla? First few questions in English. Mickey will answer it, then we'll come to Sarfraz. Is Mohamed Amir fit to play, and will he play? He's fit to play and he will play. G'day. Mickey, have you, after that game at Edgbaston, you said that it would have been a reality check for the progress of the team. Have you exceeded expectations, and what is reality now? Who knows? No, I don't think we've exceeded expectations as well at all. We came here very, very firmly in the opinion that we wanted to come here and win it. And that has been our chat all the time, and it's been used numerous times, I see, but we had the mantra, we want to get to London. Well, we got to London, we want to go one step further now. We certainly, it's been great to get to a final after where we were at, and the credit goes to the players. They've been outstanding. The way they prepared, the way they dragged themselves off the canvas after the beating at Edgbaston was amazing. So they've been really special in the way that they've bought into the concept that we wanted them to buy into in the brand of cricket, and they've done exceptionally well with that. So reality would be a nice win for us tomorrow. That would be fantastic. Mickey, I mean, this is the final and both teams would want to win it equally. But like winning the Champions Trophy, like how much more would it mean to this Pakistan team and the things that they've been through and the transformation phase that they are going through? Like how much more will it mean to them as compared to, say, in India? Look, I just know it'll mean a massive amount to them. The guys, again, have been special. I can't praise them enough. After the defeat against India, we had some honest conversation, and the guys took it on the chin and dragged themselves up from the canvas exceptionally well. For us, it'll just be almost a clincher for us in terms of the brand of cricket we want to play, where we want to take the team. You know, the focus after tomorrow is certainly going to be on the 2019 World Cup. It's going to be creating a squad. It's going to be creating some depth so that we can come here in 2019 and give it a shake, but also buying into the way we want to play our game, buying into the way we want to play our cricket, and this will just be a nice confirmer for the players that we definitely on the right track. Hi, Vicky. Yeah. Okay. Just wanted to ask, what have you been telling the youngsters in the team specifically? You know, you had 3 debutants through the campaign, and Hassan Ali is obviously a few ODIs old, and Fakhar Zaman as well. So what have you personally been telling the youngsters in the team coming into the campaign for such a big tournament, especially after that loss? Well, I think the youngsters have been great. They've come in with no fear of failure. They've come in committed to the way we want to play our cricket. Every one of the youngsters that have come in and made an impact straight away. So that's a real confirmer for us. That they've been outstanding. I guess what it does do is it again just solidifies the direction we want to move in. That's the most important thing for us, but it also gives us an insight into the thinking of these younger players, and to see them come in and be very, very brave and very committed to the way we want to play our cricket has been very, very refreshing for all of us. Mickey, you said after the group match against India that the occasion got to the players. This is a much bigger occasion. It's a final. How do you stop that from getting to the players? We've finished our preparation today with a good chat just before we came down to the ground. The guys are under no illusion as to what the expectation is on them, but they're genuinely excited. I said before the Edgbaston game, I thought they were really, really calm, but they're very, very excited right now, and there's a hell of a good vibe in that dressing room. So let's hope we can put our A game again tomorrow, because if we can, and I said it before the England game, if we put our A game together and we do the basics well, we can beat anybody. Mickey, have you spoken about breaking the myth against India in ICC events? What we've tried to do is just prepare as we normally prepare. We've concentrated more this time on our own games, on our own game plans, as to where we want to go with the game. We dissected India a lot before the game at Edgbaston, and we've sort of backtracked a little bit on that now, and sort of solidifying what we did really well, confirming what we've done well,
in terms of our bowling, in terms of our batting, in terms of our fielding, and building on that. So tomorrow is going to be about us rather than the opposition, and we've made the focus us as a team. Mickey, just related to the previous one, historically, what do you think has been different between the two sides at major events where India has always come out on top as an outsider from whatever you have observed? I mean, I know you weren't there for the previous matches, but what do you think has been the difference? I think the difference is exposure. I think exposure to massive pressure situations. And let's be under no illusion, India are a fantastic cricket team at the moment. They're going in the right direction. They're playing some brilliant cricket. But exposure to high pressure situations is what India have had above Pakistan. The PCB's changed that a little bit now with the PSL, which has been a very, very successful competition. So that exposes more and more young players to pressure situations. And I think the more we can expose our guys to those situations, the better results we get out on the ground. I think we can see our style and method catching up with the rest of the world because we're being exposed to it now. We're in the PSL, we're getting all our top players rubbing shoulders with some of the best players around the world. So that is rubbing off on our cricket now, which had certainly been, there had been a void for a period of time. Can you tell us what caused the turnaround? Because from looking ordinary against India, Pakistan has gone ahead, beaten South Africa, beaten England, now just stand one win away from winning the Champions Trophy. What caused the turnaround? Well, I think I did say after the India game that was an aberration. That was something we hadn't prepared for. We knew how hard the guys had prepared. We knew where all the guys were technically in their games. So what we've produced after that doesn't come as any surprise because that's how we trained and that's what we worked at. It was very disappointing to see that go wrong in the Indian game, but we're prepared to close. We've closed the chapter on that. That was an aberration. We're now moving forward, and the guys have played really well, and they've played exactly as I thought they'd play because we've trained properly and trained well. The only match India have lost in this tournament was here against Sri Lanka. What did you learn from that result and performance that gives you confidence for tomorrow? Well, I think Sri Lanka batted exceptionally well there. They played fearless cricket. They took the game on. They were outstanding. They really were with the bat. I don't think we can look too much into that. We've got to look at our strengths, and our strengths has been the fact that we've been able to take wickets, and we've been able to take wickets consistently through the middle periods. If we can get amongst them with the new ball, we can expose a middle order that hasn't batted much this competition. So that's pretty much our aim and focus. You know, rather than looking at what Sri Lanka did, we've got to play to our strengths, and our strengths certainly is with the ball. And if we can restrict them or defend against them, we have the attack to do that, providing we can strike up front. सरफराज पाकिस्तान ने जिस तरह कमबैक किया इस टूर्नामेंट में तो पूरी दुनिया अप्रिशिएट कर रही है पाकिस्तान की इस परफॉर्मेंस को, लेकिन एक फॉर्मर पाकिस्तान कैप्टन आमिर सोहेल ने जो रिमार्क्स दिए 2 दिन पहले, तो क्या वो पाकिस्तान टीम की जो कैंपेन है इसके हौसलों को पस्त किया है उसने या और ज़्यादा मोटिवेट हुए आप लोग? आई थिंक देखिए, सबसे पहले तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करूँगा कि इतनी ज़बरदस्त हमारी टीम की परफॉर्मेंस रही, अल्लाह का शुक्र है आज हम फाइनल में खड़े हैं। और जहाँ तक आपने बात की, अब ये तो उनकी अपनी ज़ाती राय है, वो ऐसा सोचते हैं हमारे बारे में, लेकिन हम लोग इन चीज़ों के बारे में बिल्कुल नहीं सोच रहे और हमारा अपना क्रिकेट पर पूरा फोकस है और हमारा यही फोकस है कि हम लोग जिस तरह पूरा टूर्नामेंट खेलते हुए आ रहे हैं, फाइनल में भी अच्छी थी परफॉर्मेंस करें। अब ये इस बारे में तो मैं कुछ कह नहीं सकता, ये उनकी अपनी राय है, वो ऐसा समझते होंगे उनकी राय में, तो ऐसा ही होगा। सरफराज, बिलाशुबा आप माजी हो गए इंडिया से हारना, इसको आप पसंद करेंगे कि इंडिया से हारना है कि माजी हो जाए? कल आमर खेलेंगे तो आपका क्या स्ट्रेटजी क्या होगी? आप फास्ट बॉलर को निकालेंगे या क्या करेंगे? और दूसरा, अटैकिंग कहा है मिकी ने कि हम खेलेंगे, अटैकिंग सिर्फ आप बॉलिंग में करेंगे या बैटिंग में भी अटैकिंग का सोच रहे हैं? सर देखिए, जहाँ तक रही बात आमिर की, वो तो इंशाल्लाह कल आपको पता चल जाएगा जो भी स्ट्रैटेजी होगी हमारी टीम की। और जहाँ तक आपने बात की कि देखिए हम लोग अटैकिंग ही खेलते हुए आ रहे हैं इंडिया के मैच के बाद से, जैसा कि हमने क्रिकेट खेली, बॉलिंग में भी माशाल्लाह से हमने अटैक किया ही तो विकेटें लिए हैं। और जहाँ तक आपने बात की कि बैटिंग की, देखें बैटिंग भी हमारी माशाल्लाह से फॉर्म में आ गई। पिछले मैच में जितने भी हमारे मिडिल ऑर्डर्स थे
हफीज़ भाई हो गए, बाबर हो गए, अजय अली हो गए, फ़खर, तो माशाल्लाह ये कि हर चीज़ में कोशिश करते हैं कि हम अटैक करके खेलें, क्योंकि जितनी पॉजिटिव क्रिकेट खेलेंगे उतने अच्छे रिजल्ट आएंगे। तो यही कोशिश है कि जिस तरह खेलते हुए आ रहे हैं उसी मोमेंटम को बरकरार रखें और वही मोमेंटम लेके फाइनल में लेके जाएँ। सरफराज, हमने पिछले मैच में 35 से 40 ओवर्स के दरमियान तकरीबन 37 रन बनाए थे और उसके बाद फिर हम लास्ट 8 ओवर्स में 106, इंडिया के ख़िलाफ़ बात कर रही हूँ, 106 रन हमने खाए। तो क्या डेथ ओवर्स में एक स्ट्रेटजी तो आपकी ये है कि डॉट बॉल्स खेल के आप प्रेशर डालते हैं, तो डेथ ओवर्स में जो बॉलर्स हैं क्या उनको आपको मेंटली भी साथ लेके चलना पड़ता है ताकि वो वेवर्ड ना हो जाएं, या आप समझते हैं कि सब अब इस वक्त परफेक्ट है, स्पिरिट्स हाई हैं? हाँ देखिए, सम टाइम ऐसा होता है कि जब से लास्ट ओवर की बात की आपने, से इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है, काफ़ी ज़्यादा प्रेशर भी होता है, बाद वक़्त बॉलर भी थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता है कि एक आध बाउंड्रीज लग जाती है। तो ये कि अल्लाह का शुक्र है कि जिस तरह हमारे बॉलर्स ने कम बैक किया है इंडिया के मैच के बाद, आप देखें डेथ ओवर में हमने साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट भी बॉलिंग की, हमने उनके जितने भी बैट्समैन थे उनको नई हिट मारनी थी, उसके बाद हमने श्रीलंका के खिलाफ भी। तो आई थिंक बॉलर ये डे बाई डे हमारे बॉलर्स भी बहुत ज़्यादा इंप्रूव कर रहे हैं। आई थिंक क्रेडिट जाता है टीम मैनेजमेंट को, कोच को, बॉलिंग कोच को, कि वो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि जो गलतियाँ पिछले मैचेस में हुई हैं इंशाल्लाह वो इस मैच में ना हो। सरफराज, 4 जून को जो हमारे थे उसके बाद से जो पाकिस्तान ने मैचेस जीते, तो कल कितना मुख्तलिफ नज़र आएगी पाकिस्तान टीम उस मैच से? हाँ देखें, ऑब्वियसली वो चीज़ थी, वो एक चीज़ गुजर गई और उसके बाद जिस तरह टीम ने कम बैक किया है, तो आई थिंक देखें कोशिश यही होगी कि जिस तरह हम खेलते हुए आ रहे हैं उसी तरीके से खेलें, उसी जज्बे के साथ खेलें, रिजल्ट की परवाह नहीं करनी है। यही कोशिश है कि अच्छा ग्राउंड में परफॉर्म करेंगे, अच्छे दिल से खेलेंगे तो इंशाल्लाह रिजल्ट भी बेहतर आएंगे। आपकी जो परफॉर्मेंस है वो ऑलरेडी आप फाइनल में पहुंच चुके हैं और पीछे 20 करोड़ आवाम जो है वो आपको ऑलरेडी इतना अप्रिशिएट कर रहे हैं कि आफ्टर अ लॉन्ग टाइम वो ग्लोरी क्रिकेट की वापस आई है। इसमें जो आपके नए खिलाड़ी हैं, ख़ास तौर पे जो 4-5 बिल्कुल रिलेटिवली न्यू प्लेयर्स हैं, एक तो उनके बारे में कहेंगे, और दूसरा आपकी जो कप्तानी, जैसे आपने अटैक किया तमाम जो आफ्टर इंडिया के तमाम मैचेस थे, आप वापस आए, ऊपर से रमज़ान, ये क्या कहना चाहेंगे? और दूसरा सप्लीमेंट्री क्वेश्चन के वेदर 30 डिग्री और सख्त गर्मी क्या आपके लिए इजी होगा, क्योंकि सब कॉन्टिनेंट की टीम है दोनों, तो उस हवाले से आप क्या कहेंगे वेदर इफेक्ट? देखिए नहीं, सबसे पहले तो अपनी आवाम को मैं बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि जिस तरीके से हमें हमारी टीम को बैकिंग मिल रही है आफ्टर ये 3 विक्ट्री के बाद, और जिस तरह हम लोग देख रहे हैं सोशल मीडिया पे और मीडिया पे भी जिस तरह हमारी टीम को बैकिंग मिल रही है और आवाम की दुआएं भी हमारे साथ हैं, तो पहले मैं अपनी आवाम का बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि वो जिस तरीके से हमारी इस पाकिस्तान टीम को बैक कर रहे हैं, जिस तरीके से हम लोग यहाँ पर आए थे, थोड़ी बैकिंग नहीं थी, लेकिन जिस तरीके से अब हमारी टीम को बैकिंग मिल रही है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह फाइनल में बहुत सारी दुआएं हमारे साथ होंगी। और जहाँ तक आपने बात की यंगस्टर की, देखें जितने भी यंगस्टर हमने इस टूर्नामेंट में ट्राई किए, फ़खर जमान ने पहला मैच खेला, उसकी परफॉर्मेंस आपके सामने है, शादाब खेल रहा है, रोमान रईस ने अपना पहला मैच खेला, उसने ज़बरदस्त परफॉर्मेंस की, उसके बाद फ़हीम है। तो आई थिंक ये बहुत अच्छा साइन है पाकिस्तानी क्रिकेट के लिए कि जितने भी यंगस्टर आ रहे हैं वो बड़े इवेंट में अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो आई थिंक इनके लिए फ्यूचर के लिए बहुत अच्छा है। और जहाँ तक आपने बात की वेदर की, तो आई थिंक दोनों टीमों के लिए, दोनों टीमें यही चाहती हैं कि थोड़ी सी गर्मी हो, वेदर भी अच्छा है, तो आई थिंक वेदर का कोई इतना इशू नहीं होगा दोनों टीमों के लिए। सरफराज, रुमान ने बहुत अच्छी बॉलिंग कराई थी पिछले मैच में, उनके पास काफ़ी वेरिएशंस भी हैं, बहुत अच्छे बॉलर हैं, तो क्या आपको लगता है कि वो ये वाला मैच खेलेंगे, और अगर खेलेंगे तो फिर किसकी जगह पे खेलेंगे? देखें अभी हम लोगों ने प्लेइंग 11 अभी जाके, चूँकि हम लोग सीधा यहाँ पे आ गए, अभी हम लोगों ने पिचेस देखी नहीं है, और रुमान जो खेले थे वो आमिर के अनफिट होने की वजह से खेले थे। तो देखें इस आमिर भी बिल्कुल फिट है मैच खेलने के लिए, अब जो भी हमें बेहतर लगेगा उसके मुताबिक हम अपनी टीम खिलाएंगे। हमेशा हमेशा बात होती थी कि पाकिस्तान चेज़ करने में अच्छा नहीं, लेकिन हमने इस टूर्नामेंट में देखा कि हमेशा दूसरे नंबर पर गया और चेजिंग को तरजीह दी। तो इससे कितना हौसला बुलंद हुआ है कि या कल भी इंडिया के अगेंस्ट अगर टॉस जीतते तो यही स्ट्रैटेजी लेकर आगे जाएंगे कि चेज़ करना है, इंडिया को कम स्कोर पर रिस्ट्रिक्ट करे और उसके बाद फिर चेज़ करें? देखें स्ट्रैटेजी जो है वो मैच बाय मैच हमारी बनती है, और जो ऐसी पिच जैसा पिच देखते हैं उसके मुताबिक जो है हम लोग अपनी स्ट्रैटेजी बनाने की कोशिश करते हैं। और जहाँ तक आपने बात की पाकिस्तान चेजिंग में, अच्छा देखें हमने पहले बैटिंग भी की, उसके बाद जो यहाँ पे जो स्ट्रेटजी उम्मन जो टीमें इख्तियार कर रही हैं ज़्यादातर वो यही है कि अर्ली ऑन जो है वो दूसरी टीम को खिलाया जाए और बाद में चेस किया जाए, क्योंकि होता क्या है कि यहाँ पे एक तो आउटफील्ड बहुत ज़्यादा अच्छी है और विकेट बहुत ज़्यादा बाद में अच्छी हो जाती है, तो हर टीम अपने हिसाब से स्ट्रेटजी बनाती है। तो इंशाल्लाह हम लोगों ने भी स्ट्रेटजी बना ली है, तो इंशाल्लाह उसके मुताबिक कल खेलेंगे। ये टूर्नामेंट में हमने देखा है कि जो टीम मिडल ओवर्स में विकेट लेती है वही आखिरकार जीत जाती है, क्योंकि ये विकेट ऐसे है कि जहां बल्लेबाज को रोकना बहुत मुश्किल है, खासकर इंडियन टीम का जो बैटिंग ऑर्डर जिस फॉर्म में है उस देख के आप क्या कहोगे?
देखें बिल्कुल आपने बिल्कुल सही बात की कि देखें जब तक आप विकेट आउट नहीं करेंगे, बैट्समैनों को आउट नहीं करेंगे तो आप मैच नहीं जीत सकते। 50-50 ओवर्स में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि आपको जो मिडिल्स के ओवर हैं वहाँ पे आपको स्ट्राइक मिले। तो सारी टीमें यही कोशिश कर रही हैं कि मिडिल्स के ओवर में स्ट्राइक ली जाए, और बिल्कुल इंडिया की बैटिंग स्ट्रांग है तो हमारी भी कोशिश यही होगी जो उनके मिडिल ऑर्डर बैट्समैन हैं उनको जल्दी आउट किया जाए ताकि मैच में कमबैक किया जाए। सरफराज, अब विराट कोहली आए थे, वो बोल रहे थे कि ये दिस इज जस्ट अनदर गेम। आपका अप्रोच कैसा है? आपका कोच बोले हैं बहुत एक्साइटमेंट है, यू आर टेकिंग इट एज ए बिग गेम और जस्ट अनदर गेम। सर देखें बिल्कुल जिस तरह आप पहले मैच के बाद से देखें तो हम लोग नॉकआउट की तरह ही इस टूर्नामेंट में खेलते हुए आ रहे हैं, तो ये भी हमारे लिए एक नॉकआउट गेम है। बिल्कुल हमारे लिए हम लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं। एज अ यंग टीम अगर आप देखें तो लड़के बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड हैं इंशाल्लाह, और जिस तरह पूरे टूर्नामेंट में परफॉर्म करते हुए आ रही है उसी जज्बे के साथ, उसी मेहनत के साथ इंशाल्लाह हम फाइनल भी खेलेंगे। Thank you very much. Keep the so going.